and welcome back to my YouTube channel Quad Girl. My name is Inderpreet Kaur and I welcome all of you in today's video. So in today's video we're going to talk about PCOD and we're going to talk about its causes, its symptoms and what can we do to cure it, and I'm also going to share the diet, few things that you can add or like take away from your diet that can help you cure it. And without any further ado, let's start the video. What is PCOD? So PCOD is a hormonal disorder जिसमें क्या होता है कि जो ओवरीज हैं they get enlarged and छोटे छोटे cysts जो हैं outer edges पे develop हो जाते हैं, and you'll be shocked to know 1 in 10 women in India suffer from PCOD and so many of them don't even know. सबसे पहले आप कैसे जान सकते हैं कि आपको इस PCOD है? For that you need to see the symptoms. So symptoms क्या है? पहले तो आपके irregular periods होते हैं and then you have acne on your face or on your body or it can be anywhere. So you have acne and then there are like hair growth on your face. उसके अलावा there can be weight changes. You can gain a lot of weight and that's how you can know. और उसको श्योर करने के लिए कि आपको PCOD है या नहीं है, you can get it tested from the laboratories and then आपको पता चल जाएगा you are suffering from it or not. Now we're going to talk about the causes. So basically कारण क्या है कि PCOD होने का? मेडिकल साइंस ने ये कहा है कि इसका कोई भी कारण अभी तक पता नहीं चला है. There is no firm thing that we can say that this is the root cause. There are certain factors that we can say are one of the causes or maybe one of the cause of PCOD. First of all, it can be genetical factor, like it can pass on from your family to your further generations. Other than that, it can be obesity. If you gain a lot of weight, it can be one of the cause for PCOD. Other than this, other factors can be like excess insulin, excess androgen, all those hormonal imbalances, all of that stuff can lead to PCOD. So we now have talked about symptoms, we have talked about causes and what is PCOD. Now we're going to talk about what actually PCOD leads to. तो PCOD होने से क्या दिक्कत आएगी आपको और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? So that can be infertility. So there are so many women who don't know that it is one of the major cause of infertility. Then it can lead to type 2 diabetes. Then it can also lead to various types of health problems and it can lead to heart diseases. It can also I read it on the internet that it can also lead to cancer in long term. So that is all that happens with PCOD. So now there are very simple ways, home remedies जिसके साथ हम PCOD को cure कर सकते हैं. So now we're going to talk about it. Discuss करने से पहले I would like to share few things that you need to stop doing before you start your diet or before you start treating your PCOD. First of all, do not take medications, do not take any type of medicine, because जो medicine है, what they actually do for PCOD is that they specify the symptoms. तो आपको जो symptoms हैं, जैसे आपके acne हो रहा है या फिर आपके hair growth हो रहा है, तो वो उसको decrease कर देगा, वो उसको रोक देगा, पर आपका जो root cause है वह वही का वही रहेगा. So that is one of the reason that you should not be taking medicines for PCOD. Secondly, please stop using plastic. So जब हमारा खाना प्लास्टिक के साथ कांटेक्ट में आता है तो then there's this chemical that forms estrogen जो आपके hormones को imbalance करता है, and because of that there are so many diseases that we get just with the usage of plastic. So please stop using plastic. After this, we need to stop consuming all the processed food. We need to stop consuming all the packaged foods, all the stuff that we get from the market. Start consuming home cooked food. Start consuming healthy food. Stop eating all the burgers and pizzas, which is one of the major cause of various health diseases, unhealthy lifestyle. Start having home cooked food, healthy food, and so many problems would go right away. Okay, so now we are on the main part, how to cure PCOD या फिर आप अपने hormones को कैसे balance रख सकते हैं. For that you need to do very simple things. First of all is healthy plate method, जिसमें क्या करना है, you have a plate, उसको हाफ को सैलड से भरना है. 1/4 should be protein and 1/4 should be carbohydrates. प्रोटीन में आप क्या सकते हैं, दाल, पनीर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं जिसमें आपकी रोटी, राइस, दलिया ये सब आ सकता है. उसके बाद इंक्लूड फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली, डोसा, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर बॉडी, हार्मोनल बैलेंस ऑफ योर बॉडी. So next would be adding देसी घी to your diet. According to Ayurveda, अगर आप सुबह उठ के 1 चम्मच देसी घी रोज़ खाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी लगेंगी नहीं. But if you cannot have it empty stomach, please include it into your दाल और सब्जी और किसी भी चीज़ में लगा के आप उसको ऐड करिए डाइट में and you will see the magic of it. Next would be proper sleep.
quality sleep. आपको रोज proper sleep 7 to 8 hours of sleep you should be taking, and that can be a proper time, fixed time कि आपको 10 बजे सोना है तो 6 बजे उठना है. So there should be proper fixed time जिसमें आपका रोज का sleep cycle होना चाहिए. Next is रेगुलर एक्सरसाइज. तो अगर आप रेगुलरली एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड उससे एक तो आपका वेट लूज होएगा तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो खुद ही बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे. सो इंक्लूडिंग एक्सरसाइज इन योर रूटीन एंड लूजिंग वेट विल हेल्प यू इन क्योरिंग PCOD. उसके अलावा स्टार्ट इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड बेरीज इनटू योर डाइट. दे एक्ट एज ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर बॉडी, दे आर एक्चुअली, एंड जिसकी वजह से दे हेल्प इनटू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर बॉडी. सो स्टार्ट इंक्लूडिंग फ्रूट्स. जब भी आपको भूख लगती है, बजाय आप कुछ पैकेज स्टफ लेने से या कुछ ऐसा खाने से, स्टार्ट इंक्लूडिंग एप्पल एंड बनाना एंड ऑल ऑफ दोज फ्रूट्स इनटू योर डाइट. सो इफ यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड यू आर मेंटेनिंग योर डाइट, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, तो ऑल दीज हार्मोन प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कभी नहीं सफ़र करनी पड़ती. सो basically what I would like to suggest is please take care of your health, take care of your diet, have a good sleep, laugh a lot, smile a lot, and stress नहीं लेना है. Live life, and yeah, we have very छोटी सी ज़िंदगी, so खुश रहिए, खुश रखिए, and lead a happy life and smile, and that's all for today's video. Thank you so much. Have a good day.